कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे जनार्दनो मङ्गलं दिशतु मे सदा शिवः। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। मङ्गलं गुरुदेवाय देव्यै मात्रे च मङ्गलम्। मङ्गलं भक्तवृन्देभ्यः सर्वलोकाय मङ्गलम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापगन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं निरावलम्ब सममावलम्बं वेपाटिपाशे सविपत्कदम्बं मदीयपापा चलपातसं प्रवर्ततां वा सदैव प्रवर्ततां वा सदैव प्रवर्ततां वा सदैव निरावलम्ब ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुक उवाच अत्रानुवर्णते भीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान् हरिः यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रक्रोधसमुद्भवः त्वं तु राजन्मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जातः प्राग्भूतोऽद्य देहवत्त्वं न नङ्क्षसि न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान् बीजाङ्कुरबन्देहादिर्व्यतिरिक्तो यथा नला स्वप्ने यथा श्रियच्छेदं पञ्चत्वाद्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत् आत्मा ह्यजोमरः घटे भिन्ने यथाकाश आकाशः स्याद् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः मनः सृजति वै देहात् गुणान् कर्माणि चात्मनः तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संस्कृतिः स्नेहाधिष्ठानवर्तग्निर्संयोगो यावदीयते ततो दीपस्य दीपत्वामेवं देहकृतो भव रजः सत्त्वतमो वृत्त्या जायते यथा विनश्यति न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयो परः आकाशाय चाधारो ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः एवमात्मानमात्मस्था मात्मनैवामृषा प्रभो बुद्ध्यानुमानगर्भिण्या वासुदेवानुचिन्तया चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां दक्षति तक्षकः मृत्यवो नोपदक्षन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरः अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले दशन्तं तच्छकं पादे लेलिहानं विसज्जने दशन्तं दच्छकं पादे लेलिहानं विशानने न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः एतत्ते कथितं तात यथात्मा पृष्टवान् नृपा हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टा किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीपरमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीसूतोवाच एतन्निशम्य मुनिनाभिहितं परीक्षित व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादमूलमुपसृत्य न तेन मूर्धा बद्धाञ्जलिस्तमिदमास विष्णुरातः। राजोवाच सिद्धोऽस्मि निगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरिः नात्यद्भुतमहं मन्ये महदामच्युतात्मना अज्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यदनुग्रहः पुराणसंहितामेतामश्रौमा भवतो वयं यस्यां खलुत्तमश्लोको भगवान् अनुवर्ण्यते भगवस्तक्षतादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहं प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणमभयं दर्शितं त्वया अनुजानीह मां ब्रह्मन् वाचं यच्छाम्यधोक्षजे मुक्तकामाशयं चेता प्रवेश्य सृजाम्यसो अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परमं भागवतं पदम्। सूतोवाच इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान् बादरायणिः जिगामभिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजिता परीक्षदपि राजर्षिरात्मन्यात्मानमात्मना समाधाय परं दद्यावस्पन्दासुर्यथा तरु प्राक्कूले वरिष्यसीनो गङ्गाकूल उदङ्मुखा ब्रह्मभूतो महायोगी निस्सङ्गश्चिन्न संशया तक्षकः प्रहितो विप्रा क्रुद्धेन द्विजसूनुना हन्तु कामोऽनुपं गच्छन् ददर्श पथि कश्यपम् तं तर्पयित्वा द्रवणैर्निर्वत्या विषहारिणं द्विजरूपप्रतिच्छन्ना कामरूपो दशनृपम् ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो घीकरलाग्निना बभूव भस्मसा सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनां हाहाकारो महानासीत् भुविखे दिक्षु सर्वथा विस्मिताय भवन् सर्वे देवासुरनरातयः देवदुन्दुभयोर्नेदुर्गन्धर्वाप्सरसो जगुः ववृषो पुष्पवर्षाणि विबुधा साधुवादिना जनमे जयः स्वपितरं श्रुत्वा तक्षकभक्षितं यथा जुहाव संक्रुद्धो नागां शत्रे सहद्विजे सर्वशत्रे समिद्धाग्नो दह्यमानान् महोरगान् दृष्ट्वेन्द्रं भयसंविघ्ना तक्षकः शरणं जयो अपेश्यन् तक्षकं तत्र राजा पारीक्षितो द्विजान् उवाच तक्षकः कस्मान् न देह्योतोरगाधमान् तं गोपालति राजेन्द्र शक्रः शरणमागतं तेन संस्तम्भितः सर्पः तस्मान्नाग्नो पतत्यशो पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहत्युज उदारधीः सहेन्द्र तक्षको विप्रा नाग्नो किमिति पाल्यते तच्छ्रुत्वा जुहुर्विप्राः सहेन्द्रं तक्षकं मखे तक्षकाशो पतिस्वेहा सहेन्द्रेणामृत्वता इति ब्रह्मोदिताक्षेपे स्थानादिन्द्रप्रचालितः बभूव सम्भ्रमान्मतिः स विमानः स तक्षका तं पतन्तं विमानेन सह तक्षकमङ्कम्बला विलोक्याङ्गिरिशः प्राह राजनं तं बृहस्पति नैष त्वया मनुष्येन्द्रा वधमर्हन्ति सर्परान् अनेन प्रीतममृथा वा अजन्मान जन्मनः जीवितं मरणं जन्तोर्
गच्छ्वानेव कर्मणा अराजस्ततोऽन्यो नान्यस्य प्रदाता सुखदुःखयो सर्वचोराग्निविद्युद्भ्यः क्षुत्रिव्याधाधिर्नृपा पञ्चत्वामुच्यते जन्तुर्मुग्ध आरब्ध कर्म तत् तस्मात् सत्रमिदं राजन् संस्थीयेताभिचारिकं सर्पानागशो दग्धात् जनेर्दिष्टं विभुज्यते सूतोवाच इत्युक्तः स तथेत्याह महर्षे मानयन् वचः सर्पसन्त्रादुपसरतः पूजयामास वाक्पतिं शैषाभिष्टोर्महामाया वाध्यया लक्षणया यया मुह्यन्तस्यैवमात्मा भूतेषु गुणवृत्तिभिः न यत्र गन्धं भीत्य भया विराजिता मायात्मवादे सकृतात्मवादिभिः न यद्विवादो विविधस्तत्राश्रयो मनश्च सङ्कल्पविकल्पवृत्तियत न यत्र सृज्यं सृजतो भयोः परं श्रेयश्च जीवस्त्रिभरन्वितस्त्वहं तदेतदत्सादितवाद्यवादिकं निषिध्य चोर्मीन् विरमे स्वयं मुनि परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद् यन्नेति नीत्या तदुचक्षुषक्षवः विसृज्यतोरात्मनन्यसौहृदा हृदोपगुह्यावशितं समाहिते तदिगच्छन्ति विष्णोर्यत्परमं पदम् अहं ममेति दौर्जन्यं नयेन्न ईशां देहगेहजम् अतिवादान्तिक्षीणात् नावमन्येत कञ्चन न चैवं देहमाश्रित्या वैरं कुर्वीत केनचित् नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुण्ठमेधसे यत्पादाम्बुरन्यात् संहितामध्यगामिमां शौनक उवाच प्रह्लादविर्व्यासशिष्यैर्वेदाचार्यै महात्मभिः वेदाश्च कथिता भ्रष्टा सौम्या विधेहिना श्रुत उवाच समाहितात्मनो ब्रह्मण परमेष्टिनः तद्याकाशादपुन्नादो वृत्तिरोधाद्विभाव्यते यदुपासनया ब्रह्मन् योगिनो मलमात्मनः तद्प्रक्रियाकारकाख्यं श्रुतायान्त्य पुनर्भवं ततो भूत्रिविदोङ्कारो यो व्यक्तप्रभवः सुरान् यत्तल्लिङ्गं भगवतो ब्रह्मणा परमात्मना शृणोति यायमं स्फोटं सुप्तश्रोत्रे च शून्यदृक् येन वाग्व्यज्यते यस्य शक्तिराकाश आत्मना सुधाम्नो ब्रह्मणा साक्षावाचिकः परमात्मना सर्वं त्रिपनिषो बीजं सनातनं तस्य शास्त्रयो वर्ण आकाराद्यभूत्वा धार्यन्ते ये स्त्रियो भावा गुणनामार्थवृत्तयः ततोऽक्षरसमाम्नायां सृजन् भगवानजः अन्तस्थोऽस्माशुष्वरवृषदीर्घादिलक्षणं तेनासो चतुरो वेदान् चतुर्भिर्वदनेर्विभुः सव्याहृतिकान् क्षोकारान् चातुर्होत्र विवीक्षया पुत्रान्नध्यापयात्तास्तु ब्रह्मर्षीन् ब्रह्मकोविदान् ते तु धर्मोपदेष्टारा सुपुत्रेभ्यः समादिशत् ते परम्परया प्राप्ता तत्तच्छिरधृतप्रतेः चतुर्युगोऽस्ताद्वापरादो महर्षिभिः क्षीणायुषः क्षीणसत्त्वान् दुर्मेधान् वीक्ष्य कालतः वेदान् ब्रह्मर्षयो विश्वाहृदिस्थाच्युच्चोदिता अप्यन्नप्यन्तरे ब्रह्मन् भगवान् लोकभावनः ब्रह्मेशाद्यैर्लोकपालैर्याचितो धर्मगुप्तये पराशरा सप्तवत्या मामा सकलया विभुः अवतीर्णो महाभागा वेदं चक्रे चतुर्विधं रथं गद्धर्वयजुस्साम्नां राशीनुत्तृत्यवर्गशः चतस्रा संहिता चक्रे मन्त्रिर्मणिगणा इव तासां स चतुरा शिष्या नुपाहूय महामति एकैकां संहितां ब्रह्मण्येकैकस्मै ददो विभुः पहलाय संहितामाद्यं बृहस्पत्याख्याग्मुपाचः वैशम्पायन संज्ञाय निगदाख्यं यजुर्गणं
साम्नां जयमणिये प्राह तथा छन्दोगसंहितां धर्वाङ्गिऋषिं नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे कैलाससंहितामुचे इन्द्रप्रमितये मुनिः भास्कलाय च सोऽप्याः शिष्येभ्यः संहितां सुताम् चतुर्धाव्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गवा पराशराय अग्निमित्रे इन्द्रप्रमितिरात्मवान् अध्यापयत् संहितां स्वां माण्डूक्येयां ऋषिं कविं तस्य शिष्यो देवमित्रासो भर्या दिव्य ऊचिवान् शाकल्यस्तत्सुतः स्वां तु पञ्चधाव्यस्य संहितां वात्समुद्गलशालीया गोखल्या शिशरे स्वधा जातु कर्ण्या तच्छस्यानस्य निरुक्तां सुसंहितां बलायज्ञे पविताभिर्जेभ्यो ददो मुनिः वास्कले प्रतिसाख्या भवालिकिल्याख्य संहितां चक्रे बालाय निर्भर्जाकासारश्चैव तां ददु प्रत्युचा संहिता हेता एभिर्ब्रह्मर्षिभिर्धृता श्रुते तच्छन्दसां व्यासं सर्वपापे प्रमुच्यते वैशम्पायन शिष्यावे चरकार्ध्वाय भोर्भवन् रुचि यज्ञेरुर्ब्रह्महत्यायं क्षपणं सगुरोर्वृतं याज्ञवल्क्यश्च तच्छिष्याहाह भगवन् यत् चरतेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सदुश्चरम् इत्युक्तो गुरुरप्याः कुतो याह्यलं त्वया विप्रावमन्त्रा शिष्येण यदि धीतिं त्यजाश्रुतिः देवरातसुतः सोऽपिर्च्छदित्वा यजुषां गणं ततो गतो तमुनयो ददृष्टान् यजुर्गणान् यजुषित्तिरा भूत्वा तल्लोकवपतया ददु तैत्तिरीया इति यजुशाखा आसनुषुपेशला याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मन् छन्दास्याधिगवेशयन् गुरोरविद्यमानानेषु पदस्तीर्कमीश्वरं याज्ञवल्क्य उवाच ॐ नमो भगवते आदित्याय अखिलजगदात्मा स्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विध भूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तं पर्यन्तानामन्तर्हृदेषु बहिरपि चाकाशा इवोपाधिरव्यवधीयमानो भवानेक एव क्षणलवनिमेषावयवो चित्तसंवत्सरगणेन पामादान विसर्गाभ्यां विमां लोकयात्रामनुवहति यदुभाव विबुधर्षभ सवितरदस्तपत्यनुशवन् महरः महाराम्नाय विधिनो पवित्रमानानमखिल दुरितभृजनबीजानमभर्जन् भगवतः समधीमहि तपनमण्डलं य इह भावस्थिरचरनिकाराणां निजनिकेतनानां मनिन्द्रियाणामिन्द्रियासुरगणाननात्मनः स्वयमात्मकारयामि रतो प्रचोदयति स एवेमं लोकमतिकरालवदनान्धकारसंज्ञा जगर्ग्रहगिलितं मृतकमिव विचेतसमवलोक्यानुकम्पया परं कारुणिक इच्छैवोत्थाप्य हर हरुनुशवनं श्रेयसि सुधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनि पतिरिवा साधूना भयमुदीरन्नटति परित्याशा पालेस्तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिरुपतार्हणाम् अतः भगवस्तब्चाचरणनैलिनयुगलं त्रिभुवनानुगुरुभिः वन्दितमहमहयातयामयजुः ताम् उपसरामीति सूतोवाच एवं स्तस्य भगवान् बाजिरोपधरो हरिः यजुंसयातयामानि मुनेदान् सप्रसादितान् यजुर्भिर्परोक्षाख्यातपञ्चाशतेर्विभो जगृर्वासन्यस्ता काण्डवमान् ध्यानदिनादया जैमिनी सामगस्यासि सुमन्तुस्तनयो मुनिः शृण्वांस्तु चतुस्तस्थाभ्यामेकीकां प्रासंहितां सुकर्मा चापि तच्चिस्या सामवेदतरोर्महान् सहस्रसंहिता वेदं चक्रे साम्नां ततो द्विजाम् हिरण्यनाभस्वकौशल्या पौञ्जन्तिश्चा सुकर्मणः शिष्यो जगृश्चान्या आवन्तो ब्रह्मवित्तमः उदीच्या सामगा शिष्या आसन् पञ्चशतानि वे पौंसञ्ज्यावन्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान् प्रचक्षते लौगाक्षिर्माङ्गलिः कुल्या कुशीदाक्षिरेव च कुस्सञ्जिशिष्या जगृहुः संहितास्ते शतम् कृतो हिरण्यनाभस्य चतुर्विंशतिसंहिताः शिष्य ऊचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्द्यात्मवान् श्रीकृष्णाय नमः श्रीपरमात्मने नमः श्रीवृन्दावनविहारिणे नमः
श्रीसूतोवाच अथर्वविं सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत्सुकां संहितासो विपथ्याया वेददर्शाय चोक्तवान् स्वप्लायनिर्ब्रह्मबलैर्मोदोष पिप्लायनिः वेददर्शच शिष्याते पथ्यशिष्यानथोऽसुरो कुमुदाशुनको ब्रह्मजाजनिश्चाप्यथर्ववित् वव्रोषष्ठोत्थाङ्गिरिषा सेन्धवायन् एव च अथीतां संहिते द्वे सावण्याद्या तथा परे नक्षत्रकल्पा शान्तिश्च कश्यपाङ्गिरिषादया एते आथर्वणाचार्या शृणुपौराणिकान् मुनेः त्रय्यारणे कश्यपश्चात् सावरणरक्तप्रणाम् वैशम्पायनहारितो षड्वे पौराणिका इमे अधीयन्ता व्यासस्यान् संहिता मत्पितुर्मुखा एकीकामाहमेतेषां शिष्याः सर्वाः समत्यगां कश्यपोऽहं च सावर्णी रामशिष्यो कृतव्रणः अधीमहि व्यासशिष्यः तच्छस्रो मूलसंहिताः पुराणलक्षणं ब्रह्मर्षिर्भिर्निरूपितम् शृणुस्व बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्त्रानुसारितः सर्गोऽस्यार्थविसर्गश्च भक्तिरक्षान्तराणि च वर्षो वंशानुचरितं संस्था हेतुरुपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदो केचिन् पञ्चविधं ब्रह्मन् महदल्पव्ययस्थया अव्याकृतगुणक्षोभान् महस्त्रीस्त्रीवृतोऽहमाम् भूतमादेन्द्रियार्थानां सम्भवा सर्वोच्यते पुरुषानुगृहीतानामेतेषां वासनामया विसर्गोऽयं महासमाहार बीजद्वीजं चराचरम् वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणामचराणि च कृतासेन नृणां तत्र कामाच्चोदनयापि वा रक्षाच्युतावतारेह विश्वस्वानो युगे युगे त्रियं मत्यादिदेवेषु हन्यन्ते त्रिदुषः मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वरः त्रयोदशोऽवतारश्च हरेशब्दमुच्यते राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रीकालिकोऽन्वयः वंशां चरितं तेषां वृत्तवंशधराश्च ये नैमित्तिकः प्राकृतिको आतन्तिको लयः संस्थेति कविपूर्वोक्ता चतुर्धास्य स्वभावता एतर्जीवोऽस्य सर्गादेरविद्याकर्मकारकः यं चानुशयनं प्राहुरव्यक्तार्व्याकृतमुता परे प्रतिरेकान्वयो यस्य जागृत्स्वप्नसुप्तिषु मायामयेषु तत्ब्रह्मञ्जीव वृत्स्वपाश्रया पदार्थेषु यथा दृष्टं सन्मात्रं रूपनामसु बीजादिपञ्चतान्तासु ह्रवस्थासि हृतायुतायुतम् यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वहं स्वयं योगेनावाददात्मानं वेदिहाया निवर्तते एवं लक्षणलक्ष्याणि पुराणानि प्राविदा मन्योष्टादश प्राहौ क्षुल्लकानि महान्ति च ब्राह्मणपात्रं वैष्णवं च शैवं लैवं सकारणं नारदीयं भागवतामाग्नेयं स्कान्दसङ्गीतम् अविश्वं ब्रह्म वैवर्तं मार्कण्डेयं सवामनं वाराहं मात्स्यकौर्मं च ब्रह्माण्डाख्यामिति त्रिषट् ब्रह्मण्डितं समाख्यातं साख्याप्रणयन् मुनेः शिष्यशिष्याप्रशिष्याणां ब्रह्मते ज्योतिवर्धना श्रीकृष्णाय नमः श्रीपरमात्मने नमः श्रीवृन्दावनविहारिणे नमः श्रीशौनकोवाच सूतजी जीवचिरं साधवदनवत्ताम्बरः तमस्य पारे भ्रमतां त्वां नृणां त्वां पारदर्शना आश्चिरायुषं ऋषिं प्रकण्डतनयं जनाः यः कल्पान्ते उर्वरितो येन ग्रस्तमिदं जगत् स वा अस्मत्कुलोत्पन्ना कल्पेऽस्मिन् भार्गवर्षभः नैवाधुनापि भूतानां सम्प्लवः कोऽपि जायते एक एवार्णवे ब्राह्मणं ददर्श पुरुषं किला वटपत्रपुटे तोकं शयानं त्वेकमद्भुतम् ईशनः संस्त्रियो भूयान् सूतकौतूहलं यथा तं नच्छिन्ति महायोगिं पुराणेष्वपि सम्मता सूतोवाच कृष्णस्त्वया महर्षेयं कृतो लोकभ्रमापः नारायणकथा यत्रा गीता कलिमलापः प्राप्तुजातसंस्कारो मार्कण्डेया पितुः क्रमात् सन्नासदेत सर्वं धर्मेण तपस्वाध्यायसंयुता
शांतो जट्लोबलकलांबरं बिभ्रत्कमण्डलं दण्डामुपवीतं समेखलं कृष्णाजिनं साक्षिसूतं कुशाचानिमर्थये अग्नर्कगुरो विप्रात्मा सृष्टयन् स्कन्धयोर्हरिं सायं प्रातः सुगुरवे भेक्षमाहृतवाक्यतः बुभुजो गुरुवनुज्ञाता कृतं सकृन्नो चेदपोषिता एवं तपस्वाध्याय पर्ववर्षाणामयुतायुतम् आराधयन् ऋषिकेशं जिज्ञे वृत्तं सुदुर्जयं ब्रह्मा गुरुर् भृगुर्वक्षो भवो दक्षो ब्रह्मपुत्राश्च ये परे नृदेव पितृभूतानि ते नासन्नातिविस्मृता इत्थं ब्रह्म तथा तपस्वाध्याय संयमे तद्यावधोक्षजं योगी दुस्तक्लेशान्तरात्मा तस्यैवं युञ्जतस्तं महायोगेन योगिनः व्यतीताया महान् कालो मन्वन्तर्षडात्मका एतत्पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमेऽस्मिन् किलान्तरे तपोऽभिसङ्कितो ब्रह्मन्नारेभे तद्विघातनं गन्धर्वाप्सरसः कामं वसन्तमलयानिलो मुनियो प्रेषयामासार्जस्तो कमदो तथा देवे तदाश्रमं जग्मुर्हिमात्रे पार्श्वोत्तरे पुष्पभद्रा नदी यत्राचित्राख्या च शिला विभो तदाश्रमपदं पुण्यं पुण्यत्रिमलताञ्चितं पुण्यद्विजाकुलाकीर्णं पुण्यामलजलाशयम् मत्तभ्रमरसङ्गीतं मत्तकोकिलकोजितं मत्तवर्हिनटाटोपं मत्तद्विजुकुलाकुलं वायुप्रविष्ट आदाय हिमनिर्झरशीकरान् दृशुम्नोभिः परिष्वक्तो बभावत्तं भजन् स्मरन् ओद्यच्चन्द्रश्रावस्वक्त्रा प्रवालस्तवकालिभिः गोपदुमलताजाले तत्रासेन्दुकुसुमाकरा अन्वीयमानो गन्धर्वे गीतवादित्रयूथकैः अदृश्यताप्ताप्चापेषु स्त्रीयुतपतिस्मरः वाग्नं समुपासीनं ददृशो चक्रकिङ्कराः मीलिताक्षं दुरादर्शं मूर्तिमन्तमिवानलम् अगतुस्तस्य पुरता स्त्रियोऽथो गायका जगो मृदङ्गप्पि वीणापणवैर्वाद्यम् चक्रुमनोरवं चन्द्रेस्त्रं स्वधनुषी कामास्पञ्चमुखं तदा मधुर्मनोरजस्तोका इन्द्रवृत्त्याकव्यकम्पयन् क्रीडन्त्या पुञ्जकस्थल्या स्कन्दुकी स्तनगौरवात् वृषमुद्विग्नमध्याया केशविस्त्रंसितस्रजा एतस्ततो भ्रमन् दृष्टे श्लस्त्या कन्दुकं व्याजुर्वायुर्जहारद्वासा चोत्रं त्रुटितमेखलं विसर्जत दावाणं मत्पातं स्वजिनं स्मरः सर्वं तत्राभवन्मोघामनीषस्य यथोद्यमः सातायत्तमपकुर्वन्तो मुनेस्तत्तेजसा मुने दह्यमाना निवर्तो प्रबोध्या हीमवार्हका इन्द्रानुचरे ब्रह्मधर्षितोऽपि महामुनिः यन्नागादहमो भावं न तच्चित्रं महत्सु हि दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान् स्वराट् तत्त्वानुभावं ब्रह्मर्षे विस्मयं समगात् परम् तस्यैवं युञ्जतश्चित्तं तपस्वाध्यायसंयमेः अनुग्रहाय विरासीन्नरनारायणो हरिः तौ शुक्लकृष्णो नवकञ्जलोचनो चतुर्भुजो रोरवकल्वल्कलाम्बरो पवित्रपाणिपवीतकं त्रिपित कमण्डलं दण्डव्रजं च वैष्णवं पद्माक्षमालामुतजन्तुमार्जनं वेदं च साक्षात् तव एकरूपिणो तपत्तदुर्वर्णविप्रसङ्गरोचिषा प्रांशुं दधानो विविधर्षभर्जितो देवी भगवतो रूपे नरनारायण ऋषि उत्थिष्ठोत्थायादरेण चेरन्नामाङ्गेन दण्डवत् श्रुतन्दर्शनानन्दानिवृत्तात्मेन्द्रियाश्रया हृष्टरोमासु पूर्णाक्षो न सेहे तावदीक्षितो उत्थाय प्राञ्जलिः प्रभवा उत्सुक्यादाश्लसन्निवः नमो नम इतीशानो वभासे गददाक्षरः तयोरासनमादाय पादयोरविनज्य च अर्हेणानुपुण्डुलेपेन स्तूपमाल्यैरपूजयत सुखमासनमासीनो प्रसादाभिमुखो मुनिः पुनरानम्य पादाभ्यां गरिष्ठा विदवब्रवीमार्कुण्डोवाच किं वर्णये तव विभो यदुदीरितोऽसु संस्पन्दते तमनुवाङ्मन इन्द्रियाणि स्पन्दन्ति वेतनभृतामसक सर्वयोश्च स्वस्याप्यथा भजतामसि भावबन्धु
भगवतो भुक्मस्त्रिलोक्या क्षेमाय तापविरमाय मृत्युजित्ति नानाभिघर्षवितुमन्नतनूर्यथीदं सृष्ट्वा पुनर्गसि सर्वमोर्णनाभि तस्याभितुस्थिरचरेषु तुरङ्घ्रिमूलं यस्तं च कर्मगुणकालरुजः स्पृशन्ति यद्वेस्तुवन्ति निनमन्ति यजन्तभीक्षणं ध्यायन्ति वेदहृदया मुनिजस्तदापि नान्यं तवाङ्घ्रिपनयादपवर्गमूर्ते क्षेमं जनस्य परितोऽभीश विद्मा ब्रह्मा बिभीत्य कलमतोऽपराधधिष्णा कालस्य ते किमुत तत्कृतभौतिकानां तद्वे भवाम्यतृध्यस्तपादमूलं हित्पेदमात्मच्छतीताचात्मगुरोः परस्य देहात्पार्थं सदन्त्यमभिज्ञमात्रं विन्देतते तर्हि सर्वमनीषितार्थं सत्त्वं रजस्तम इति सदवात्मबन्धो मायामयास्तलयोदयहेतवोऽस्य लीलाधृता यदपि सत्त्वमयि प्रशान्ति नान्येन व्यसनमोहभिश्च याभ्यां तस्मात्तवेह भगवन्नथपतावकानां शुक्लां तनुं सुदयिता कुशला भजन्ति यत्सात्वता पुरुषरूपमुशन्ति सत्त्वं लोको यतो भयमुतात्मसुखं न चान्यं तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरवे परदेवतायै नारायणाय रसे च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय यं वेन वेदवितताक्षपथेर्प्रमद्भिः शन्तं स्वखेष्वसु हृद्यप्यपथेषु तन्मायया भृतमती सौ एव साक्षाद्यादस्तवाखिलगुरोर्पुषाद्वेदं यद्दर्शनं निगम आत्मरः प्रकाशं मुह्यन्ति यत्र कवयो जपरायतन्तः तं सर्ववादविषयप्रतिरूपशीलं वन्दे महापुरुषमात्मनिगूढबोधं श्रीकृष्णाय नमः श्रीपरमात्मने नमः श्रीवृन्दावनविहारिणे नमः। सूत उवाच संस्तुतो भगवान् नित्यं मार्कण्डेयेन धीमता नारायणो नरसखा प्रीतपाः भृगुत्वं। श्रीभगवानुवाच भो भो ब्रह्मर्षिवर्यांसि शुद्धात्मा समाधिना मयि भक्त्यानपायिन्या तपस्वाध्याय संयमे वयं ते परितुष्टास्मात् ब्रह्मचर्यया परं प्रतीच्छ भद्रं ते वरदेशादभीप्सितं ऋषिरुवाच जितं ते देवदेवेशा प्रपन्नार्ति हराच्युता वरेणेतावतालं नो यद्भवान् समदृश्यता गृहीत्वा जातयो यस्या श्रीमत्पादाब्जदर्शनं मनस्वा योगपक्वेन स भवान् मे च गोचरा अतां द्विजपत्राक्षा पुण्यश्लोकशिखामणे दृक्षेमायां यया लोका सपालो वेदसद्भिदां। श्रुतोवाच इति दितोर्चितः कामांशिना भगवान् मुने तथेति सस्मयन् प्रागान्वर्याश्रममेश्वरा तमेवाचत्यन्नरथां ऋषिश्वत्रमेव सः तस्सन्नग्नर्सोमावो भूवायो विविधात्मसु ध्यायन् सर्वत्र च हरिं भावद्रव्यैरपूजयत क्वचिन् पूजां विसस्मारा प्रेम प्रसरसंप्लुता तस्यै कदा भृगुश्रेष्ठा पुष्पभद्रा तटे मुनेः पाशीनस्य सन्ध्यायां ब्रह्मन् वायुरभून्मान् तं चण्डशब्दं समुदीरयन्तं बलाकान् भवन् करालात् अक्षस्तविष्ठा मुमुक्षुस्तटद्भिः सुनन्त उच्चैरविवर्षधारा ततो दृश्यन्तश्चतुस्समुद्रासमन्ततः स्मातलमाग्रसन्तः समीरवेगोर्मिभिरुप्रनक्रामः वहयावर्तकवीरघोषा अन्तर्विश्चाद्भिस्तरे संसतः हृताभिरुपतापितं जगत् चतुर्विधं भीक्षात्मना मुनिः जलाप्लुतं क्ष्मां विमना समत्रसत् तस्यैवं दीक्षत ऊर्मिभीषणा प्रभञ्जना भूर्वितवामहर्णवः आपूर्यमाणो वरसद्भिरम्बुदे क्ष्मामप्यधिपावर्षाद्भिः समम् सक्षमातरिक्षं सदिवं सभागणं त्रैलोक्यमासीत् सह दिग्भिराप्लुतं स एक एवोर्वरितो महामुनिर्विभ्रामक्षिप्य जटान्दवत् क्षुत्रपरीतो मकरे स्थितिमङ्गलैरुद्रभूपद्रुतो वाजिवस्वता हता अवश्य पारिपत्यो भ्रमन् दिशो न वेदखं गां च विस्त्रमे स्थिता
क्वचित् गते महावर्ते तरले स्नाडितः क्वचित् यादोभिर्भक्षते क्वापि स्वयमन्येन घातिभिः क्वचिच्छोकं क्वचिन्मोहं क्वचित् दुःखं सुखं भयं क्वचिन्मृत्युमवाप्नोति व्याध्याधिर्मिरुतार्दिता आयुतायुतवर्षाणां सहस्राणि शतानि च वितिर्भ्रमतस्तस्मिन् विष्णुमायावृतात्मनां शगदाधिभ्रमस्तस्मिन् पृथिव्या गगुद्विजः नग्रोपधोपं दृशे फलपल्लवशोभितं प्रागुत्तरस्य शाखायां तस्यापि ददृशे सुषुं शयानं पर्णपुटके कृशन्तं प्रभयात्तमः महामर्गतस्यां श्रीमद्वदनपङ्कजं कम्बुग्रीवं महोरस्कं सुनासं सुन्दरभ्रुवं स्वास्येदलकाभातं कम्बुश्रीकर्ण दाढिमं विद्रुमाधरशुभाषेण क्षेणायायतु सदास्मितं पद्मगर्भारुणापाङ्घ्यहासावलोकनं श्वासेन्द्रबलिसंविघ्नाभिलधोलोदरं चार्वङ्गलिभ्यां पाणिभ्यामुन्नीय चरणाम्बुजं मुखे निधाय वेन्द्रोधयन्तं वीक्ष्य विस्मिता तद्दर्शनात् ह्लात् परिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्लः पद्मविलोचनाम्बुजा प्रहिष्टरोमाध्वपुषावशङ्किता पृष्टुं पुरस्तं प्रशशारबालकं ताच्च विश्वोर्वेशस्तेन भार्गमाशोन्तशरीरं मस्को यथा विशतं तत्राप्यदो नस्तं चष्टकृत्नशो यथा प्रामुह्यततीव विस्मिता खं रोदसी भगडान् त्रिसागरान् दीपान् सवर्षान् कग्वासुरासुरान् वनानिदेशान् सरितस्पराकरान् कीटान् व्रजानान् श्रमवर्णवृत्त्या महान्तिभूतान्यतभौतिकान्यशोकालं च नानायुतकल्मवल्कल्पकम् यत्किञ्चिदन्नं व्यवहारकारणं तदर्शं सतीवावभासतं हिमालयं पुष्पवहां च तां नदी निजाश्रमं तत्र सरिषी न पश्यता विश्वं विंशतितान् सोर्वे बर्हिर्निरस्तो निपतलयाब्धो तस्मिन् पृथिव्या कौमुदी प्ररूढं वटं जत्पर्णकुटेशयानं तोकं च तत्प्रेम सुधा स्मृतेन निरीक्षितोपाङ्गनिरीक्षणेन अत्यतं बालिकं वीक्षा नेत्राभ्यं धिष्ठितं हृदि अभ्यदधि संक्लिष्टा परिस्वप्तमधोक्षजं तावत् स भगवान् साक्षात् योगाधीशो गुहाशया अन्तर्ददार्शे सद्यो यतेयानीश निर्मिता तन्वथ वटो ब्रह्मन् सलिलं लोकसम्प्लवः तिरोधायि क्षणादस्या स्वास्त्रमे पूर्वपस्थिता। श्री कृष्णाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री वृंदावनविहारिणे नमः। सूत उवाच स एव मनुभूयेदं नारायण विनिर्मितं वेवं योगमायास्तमेव शरणं ययो मार्कण्डेय उवाच प्रपन्नोऽस्मिन् भृगूलं ते प्रपन्ना भयदं हरे मायया विबुधा पूष्यन्ते ज्ञानकाशया। सूतोवाच तमेवं निभृतात्मानं वृषेणादिवे पर्यटन् रुद्राण्या भगवान् रुद्रो ददर्श स्वगणे निर्भृता यथो मां तमृषं वीक्षा गिरिशं समभाषत तस्यं तमृषं वीक्षा गिरिशं समभाषत तस्यैवं भगवान् विप्रं निभृतात्मेन्द्रियाशयं निवृतो जसवृत्ताप्रातं वातापाये धारणवं पूर्वस्य तपस्साक्षात् संसिद्धिं सिद्धितो भवान् श्रीभगवान् उवाच नैवे छत्याशिषः क्वापि ब्रह्मर्षिर्मोक्षमप्युता भक्तिं परां भगवती लब्धवान् पुरुषेभ्यये तथापि समदिश्यामो भवान्नीतेन साधुना यं हि परमो लाभो नृणां साधु समागमा। श्रुत उवाच इत्युक्त्वा तमुपि आया भगवान् सतां गति ईशानाधर्विद्यानामीश्वरः सर्वदेहिनां तयोरागमनं साक्षादीश्वरो जगदात्मनः न वेदब्धधीवृत्तिरात्मानं स्वमेव च भगवान् तद्विज्ञानजगदीशो योगमायया आविशद्कः कागुहाकाशम्बारिचित्रमिवेश्वरा आत्मन्नपि विश्वं प्राप्ता जटाधरं रक्षं दशभुजं प्रांशो मुद्यन्ताविभास्करं व्याघ्रचर्माम्बरधरं शूलकृत्वाङ्गचर्मभिः अक्षमालाडमरुका कपालासिधनुः सह घ्राणं सहसां भातं चक्षुर्हृदे विस्मिता केवलं कृत एवेति समाधेर्विरतो मुने नेत्रे उन्मील्यदर्शे सगुणं सोमयागतम् रुद्रं त्रिलोके गुरुं ननाम शिरसा मुनि
तस्मै सपर्याम्य ददन् सगणाया सहोमया स्वागतासनपाद्यर्घा गन्धस्त्रधूपदीपके आचात्मानुभावेन पूर्णकामस्ते विभो करवाणुकिमीशानायनेदं निवृत्तं जगत् नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमदाय च प्रजोजुषे प्रघोराय नमस्तभ्यं तमोजुषे सूतोवाच एवं स्तुतस्य भगवानादिदेवास्तां गते परितुष्टः प्रसन्नात्मा प्रशंस्तमभाषत श्रीभगवानुवाच ब्रह्मणेश्वरः कामं वरदेशा वयं त्रयः अमोघं दर्शनं येषां मर्त्यो यद्विन्दते मृतं ब्राह्मणा साधवस्वान्ता निस्सङ्गा भूतवत्सला एकान्तभक्तास्मासु निर्वैरा समदर्शिना स लोकालोकपालास्तान् वर्णयन् वदन्यन्तर्तुपासते अहं च भगवान् ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वरा कतिमयित्तेज्ये च विधामन्वपि वक्षक्षते अनात्मानश्च शापे स्मान् वयमीमहि नहिं मयानि तीर्थानि वा चेतनोज्झिता हे पुरन्दुरे कालेन यूयं तद्दर्शनमात्रतः ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो यस्मद्रूपं त्रयीमयं प्रभत्यात्मनसमाधान तपस्वाध्यायसिन्मे श्रवणादर्शनाद्वापि महापातिक्नोऽपि वः सुस्येरन्नात्मजाच्चापि कुमपासम्भाषणादिभिः सूत उवाच इति चन्द्रललामास्य धनुर्गुह्यपवमितं वाचो मृताय विश्वेनादित्यं सकर्णयोऽपिबन् सचिरं मायाभिष्टभ्रामिता करिष्ठो भृशं शिवभागमृध्वस्तक्लेशं पुञ्जस्तमब्रवीत् ऋषिरुवाच अहो ईश्वरलीलेयं द्विभाव्या शरीरिणाम् इन्नवन्ति स्तव्यानि स्तवन्ते जगदीश्वरा धर्मं ग्राहितुं प्रायां प्रवक्तारश्च देहिनाम् आचरन्त्यमुक्नो मोदत्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च नैतावता भगवता स्वमायायामयः पृथ्वी न तुष्येदानुभावस्तेर्मायिना कुहुकं यथा दृष्टेदं मनसा विश्वामात्मना नो प्रविश्ययाः गुणे गुरुर्विराभाति कर्ते वा स्वप्नदृग्यथा तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलाय द्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्ते कमृणेनु परं ब्रह्मोमन् वरं तन्वरदर्शनात् दर्शनात् पूर्णकामस्त्यकामा पुमान् भवे वरमेकं ऋणेत्थापि पूर्णात् कामान् दर्शनात् भगवत्युच्यतां सा भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि सूतोवाच वितर्जितो विष्णु तथा मुन्ना सूतया गिरा तमागुमाच्छर्वा सर्वया चाभिनन्दिता कामो महर्षि सर्वोऽयं भक्तिमास्त्वमधोक्षजे आकुपान्तायुष पुण्यमजरामरता तथा ज्ञानत्रैकालिकं ब्रह्मन् विज्ञानं च विरक्तिमत ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात् पुराणाचार्यतास्तु ते सूत उवाच परम्परान् स मुनये दत्त्वाग्रात्रक्ष ईश्वराः तेभ्ये तत्कर्म कथनान्ननुभूतं पुरामुना सोऽप्यवाप्तमहायोगी महिमा भार्गवोत्तमा विचरत्युदराभ्यध्याहरावेकान्ततां गतः अनुवर्णितमेतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमता अनुभूतं भगवतो माया वैभवशं मद्भगम् एतत् केचित् भूत्वा स्वमाया संसर्तिवात्मना अनाद्यवर्तितं कृष्णनृणां कदाचित्कं प्रचक्षते एवमेतं भृगुवर्यवर्णितं रताङ्गपाणेरनुभावभावितं संस्रावये संसृणुयादुगाभवो सयोर्णवर्मा संस्तरि भवेत् श्रीकृष्णाय नमः श्रीपरमात्मने नमः श्रीवृन्दावनविहारिणे नमः सौनक उवाच अथेममर्थं पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमं समन्तस्तन्त्राद्धान्ते भवान् भागवत तत्त्ववित् तान्त्रिका स परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पते आङ्गोपाङ्गाङ्गाकल्पं कल्पयन्ति यथा च ये तन्नो वर्णभद्रं त्रिक्रियायोगं बहुत्सताम् येन क्रिया नैपुण्येन मर्त्यो यायादमर्त्यतां सूत उवाच नमस्कृत्य गुरून् वक्षे विभूतिर्वैष्णवीरपि या प्रोक्ता वेदतन्त्राभ्याम् आचार्ये पद्मजाद्वि मायाधीर्नवविस्तत्वे सविकारमयो विराट् निर्मतो दृश्यते यत्र सत्के भुवनत्रयम् एतद्वै पौरुषं रूपं भूः पादोद्यो शिरो नभः नाभिसूर्णोक्षणीनाशे वायुष्कर्णो दिशः प्रभो प्रजापतिस्प्रजननामपानो मृत्युरीषुतो तद्वाहवो लोकपाला मनश्चन्द्रो प्रभो यमः
लजोत्तरोधरो लोभोदत्ता ज्योत्नामस्मयो भ्रमा रोमाणि भूरा भूम्नो मेघा पुरुषमूर्धजा यावानयं मे पुरुषो यावत्ता संस्थियामिता तासानवान सा महापुरुषो लोकसंस्थया गोष्ठवप्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्विभृत्यजा तत्प्रभा व्यापिनी सा च श्रीवत्तरमूर्षा विभु सुमायां मनमालाख्यं नानागुणमयीं दधत् व्यासच्छन्दोमयं पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिवित्तरम् विभक्ति साकुम्ने योगं च देव मकरकुण्डले मौलिं पदं पारमेष्टं सार्वलोकाभयङ्करम् अव्याकृतमनन्ताख्यामासनं यदि निश्चितः धर्मज्ञानादिर्युक्तं सत्त्वं पद्ममिहोच्यते ओजस्सहोबलं युतं मुक्तत्वं पदागदां ततत् अपां सत्त्वं दुर्वरं तेजस्तत्त्वं सुदर्शनं नभो निजं नवस्तत्त्वमसि चर्म तमोमयम् कालरूपं ननुसारं तथा कर्ममयोषिदम् इन्द्रियाणि सरानाहुराकूतीरस्य चन्द्रं तन्मात्राण्यास्मभिव्यक्तिं मुद्रयार्था क्रियात्मनां मण्डलं देवयनं दीक्षा संस्कारात्मनः परिचर्या भगवतात्मनो दुरितक्षया भगवान् भगशब्दाता लीला कमलमद्वदहन् धर्मं यशश्च भगवान् समर्प्य जनेन भजत आदिपत्रं तु वैकुण्ठं द्विजाधामा कुतो भजं त्रिविद्वेदात्पूर्णाक्षो यज्ञं वाति पुरुषम् अनपायिनी भगवती श्री साक्षादात्मनो हरेः विष्णुसेनास्तन्त्रमूर्ति विदिता पार्षदादिपा अन्धादयोष्टोद्वास्थाश्चात्तेनिमात्या हरेर्गुणाः वासुदेवा संकर्षण प्रद्युम्ना पुरुषा स्वयं अनिरुद्धा इति ब्रह्मन्मूर्तिव्यूहो विधीयते स विश्वस्तेजसा प्राग्स्तुरीया इति वृत्तिभिः अतीन्द्रिया स यज्ञैर्भगवान् परिभाव्यते अङ्गोपाङ्गयुधाकल्पे रोगान् तच्चतुष्टयम् विभर्ति स्मा चतुर्मूर्ति भगवान् हरिरेश्वरः हिरण्यध्वजिर्षभ स एव ब्रह्मयोनि स्वयन्द्रगं स्वमहिमा परिपूर्णमाया च स्वयि तत् सृजति हरिपादित्याख्यानावृताक्ष वृत इव निरुक्त तत्परेरात्मलभ्यः श्रीकृष्ण कृष्ण सख विष्णु श्रवा विनिदृक् राजन्नवंशधनानववर्गवीर्या गोविंद गोपवनिता व्रजभृत्तगीता तीर्थस्रवस्त्रमणमङ्गलपायुत्यान् एतं कल्पत्थाया महापुरुषलक्षणं तच्चितः प्रयतो जप्त्वा ब्रह्मवेद गुहाशयं सोऽनु उवाच शुको यदा भगवान् शृणराताय शृण्वते सौरोगणमासि मासी नानावशे सप्तका तेषां सा नामानि कर्माणि स्मृतानामधीश्वरेः रोहिणा सप्तधानां व्यूहं सूर्यात्मनो हरे सूतोवाच अनादित्या विष्णोरात्मना सर्वदेहिनां निर्मतो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते स एव हि लोकानां सूर्य आत्मा धरे सर्ववेदक्रियामूला वृषभिर्ब्रह्मधोदिता कालो देशा क्रिया कर्ता करणं कार्यमागमः द्रव्यं फलविधि ब्रह्मन्नवधोक्तो जया हरि मत्वादिशद्वादशु भगवान् कालरूपधृक् लोकतन्त्राय चरते पृथग्द्वादशभिर्गणे दाता कृशस्थले हे द्रवासुकीरगन्मने पुनस्तुम्बुरुते मधुवासं नयन्तमे अर्यमापुलोथौजा प्रेते पुञ्जकस्थले नारदा कच्छनीरच्चान्ति ते स्म माधवं मित्रोत्रि पौरुषे योथा तक्षको मेनकाः तत्स्वन् इति हेते शुक्रमाशं नमन्तमे वसिष्ठो वर्णोरम्बा सहञ्जन्यस्तथा मोः शुक्रश्चित्रस्वरेश्च शुचिमासं नयन्त्यमे इन्द्रो विश्वावसुस्तोता एलापत्रस्थाङ्गिरा ब्रह्मलोचाराक्षो वर्यो न भौमाशं नयन्तमे विश्वस्तुनोक्सेनश्च व्याघ्र आसारणो मृगो अनुम्लोचा संगपालो नवस्याख्यं नयन्तमे पूषा धनञ्जयो वाता सुषेणा सुरुचस्तदा कृताची गौतमश्चेति तपोमाशं नयन्तमे ऋतुर्वर्चा भरद्वाजा पर्जन्यसेन तथा विश्वम् ऐरावतश्चैव तपस्याखं नयन्तमे तांसु कश्यपश्चार्चार्तसेन तथोर्वशी विद्धो चतुर्महाशृङ्गासो होमाशं नयन्तमे भगास्फूर्जोरिष्टनेमिरुण आयुश्च स पञ्चमः कर्कोटका पूर्वचित्ते पुष्यमासं नयन्तमे त्वष्टार्चीकतनया कम्बलश्च तुलोत्तमा ब्रह्मापेतोदशतजित् तत्राष्टाशम्भरा विष्णुरश्वतरोरम्बा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित् विश्वामित्रो स्मखाप्येता वरुणमासं नयन्तमे
ईसा एता भगवतो विष्णुरादित्यस्य विभूतया समर्तां सन्ध्योर्नृणां हरन्त्यम्भो दिने दिने द्वादशस्यापि मासेषु देवेषु षड्भिरस्य वे चरन्मन्ता तनुते परत्रे च सन्मतिं तामर्जुननिं तन्वृषव्यासन्तमन्त्यमुं इन्द्रवास्तं प्रगायन्ति नृत्यं सप्तर्षो कृता उन्नह्यन्तीर्थं नागा ब्राह्मणो रथयोजुकाः चोदयन्तीर्थं पृष्ठेनैर्तावलशालिना बालिखिल्या सहस्राणि षष्ठिर्ब्रह्मर्षिर्योमलाः पुरतोऽभिमुखं यान्ति स्तुवन्ति स्तुभिर्विभुम् एवं ह्यनादिनिधनो भगवान् हरिरेश्वरा कल्पे कल्पे स्वात्मानं पीयूष्याहे लोकानवत्यजा। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीवृन्दावनविहारिणे नमः। श्रुतोवाच नमो धर्माय मते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना एतद्वाक्कृतं विप्रा विष्णोश्चरितमद्भुतं मभद्भिर्यदहं पृष्ठो नारायणाणां पुरुषोचितम् अत्र संकीर्ततः साक्षात् सर्वपापो हरो हरिः नारायणो ऋषिकेश भगवान् सात्त्वां पति अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रवाप्यं ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतम् भक्तियोगस्माख्यातो वैराग्यं च तदाश्रमं पारीक्षितमुपाख्यानं रार्धाख्यानमेव च प्रायोपवेशुराजर्षि प्राशापात् परीक्षिता शुकस्य ब्रह्मर्षभस्य संवादश्च परीक्षिता योगधारणयोत्क्रान्ति संवादो नारदाजयोः अवतारानुगीतं च सर्गप्राधानिको कृता पितरोत्थव संवादाच्छत्रमैत्रेयोस्तथा पुराण संहिता भ्रष्टो महापुरुष संस्थिति ततः प्राकृतिका सर्गा सप्तमेका वेकृतिकाश्चये ततो ब्रह्मांड सम्भूतर्वैराजा पुरुषो यथा कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य गतिस्पद्मा समुद्भवा भव उद्धरणे मोधेर्भिरण्याक्ष वधो यथा ऊर्ध्वत्रिजं वाक्सर्गो रुद्रसर्गस्तैव च अर्धनारी नरिष्याता यतः स्वायम्भुवो मनो शत्रुरूपा च या स्त्रीणामाद्या प्रकृतमा सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्तमस्य प्रजापते अवतारो भगवता कपिलस्य महात्मना देवहूत्या च संवादा कपिलेन च धीमता नव ब्रह्मसमुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चात् पृथो प्राचीनवर्षा नारदस्य संवाद ततः प्रेमप्रदं द्विजा नाभेदतो नो चरितामृषभस्य भरतस्य च द्वीपवर्षमुद्राणां गिरिनर्दुपवर्णनम् ज्योतिश्चक्रसंस्थानं पाताला नरकस्थिति दक्षजन्म प्रचेतोभ्यः तत्पुत्रीणां च सन्तति यतो देवासुरनरस्त्रिजन्नगखगादया त्वाष्ट्रस्य जन्मदिनतरं पुत्र्यो च द्वितीयर्द्विजा देत्वीश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मना मन्वन्तरानुगतनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावतारश्च विष्णोर्हयशिरादया कौर्मं धान्वन्तरं वामनं च जगत्पते क्षीरोदमजलं तद्वत्प्रार्थे दिव्योपुषां देवागुर्महायुद्धं राजवंशानुकीर्तनं इक्ष्वागो जन्म तद्वंशा सुद्दुम्नस्य महात्मना विलोपाख्यानमन्त्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुगतनं ससाद्याद्या निर्गादया सौपन्नं चाथ शर्याते कुक्षस्थश्च च धीमता खट्वाङ्गच्च मान्धातु सौभरे सगरश्च च रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं निमेरङ्गपरित्यागो जनकायाञ्च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य नक्षत्रकर्णं बुवा एलस्य सौविश्वस्यायाते रौषस्य च तो सन्तीर्भरतस्यापि सहन्तनोस्तस्य च याते जेठपुत्रस्य यो रंशानुकीर्तनां यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाखो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धश्च गोकुले तस्य कर्माण्डपाराणि कीर्तनान्यासुरद्विषा पूतनासुपयास्पानं सट्टोच्चाटनं दिशो त्रणावर्तस्य निष्पेषस्तथैवागवत्सयो धेनुकस्य च सभ्राता प्रम्लम्बस्य संख्या गोपानां पुत्रान् दावाग्नि परिसर्पता दमनं काल्यस्याहेर्महाहेरन्दमोक्षणं पृथचर्यात्कन्यानां यत्र तुष्टो चितो कृतैः प्रासादो जगपत्निभ्यो विप्राणां चानुतापनं गोवर्धनोद्धारणं च सत्रश्च सुरभिरथा
यज्ञाभिषेकं कृष्णशास्त्रीभिः क्रीडाचरात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धिर्वधोरिष्टस्य केचिना अक्रूरगमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयो व्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं तथा गजमुष्टिकचाणूराकंसादीनां च योगदा कृतस्यानयनं पुनः सान्दीपनेर्गुरोः मथुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतबुद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणा तुजा जरासंसमानीता सैन्यश्च बभूव बहुशो वदा गात्रं गणवे यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्यानिवेशनम् आदानं पारिजातस्य चतुर्माख्या सुरालया रुक्मिण्याहरणं युद्धे प्रमथ्यादिष्टो हरे हरस्य दर्मणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनं प्राग्ज्योतिष्पतिं मत्वा कन्यानाहरणं चयत् चेत् पौण्ड्रस्य शाल्वानां दन्तपुत्रस्य दुर्मते शम्बरो द्विविधः पीठो मुरा पञ्चजनादया माहात्म्यं च बुधस्तेषां वाराणस्याच्युताहनं भारावतरणं भोगने निमित्तीकृतपाण्डवा प्रशापापदेशेन संभारा शुक्लस्य च उद्धवस्य संवाद वासुदेवस्य च अद्भुतं यत्रापि विद्याखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णया ततो धर्ममर्थप्रत्यगात्मयोगानुभावतां योगलक्षणवृत्तिश्च कलो नृणामुपप्लवा चतुर्विधश्च प्रलया उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा दीहत्याग्निराजर्षे विष्णुरातस्य धीमता शाखाप्रणयनानवृषेतमापिण्डे सत्कथा महापुरुषविन्यासा सूर्यस्य जगदात्मना इति चोतं द्विजश्रेष्ठा पृष्ठो मिहास्मि वः लीलावतारकर्माणि कीर्तितानि सर्वतः सर्वशः पत्तस्खलितश्चार्थः क्षुत्वा वा विवशो ब्रह्मन् हर्ये नाम चिरमुच्यते सर्वपातकात् पत्तस्खलितश्चार्थः क्षुत्वा वा विवशो ब्रह्मन् हर्ये नाम चिरमुच्यते सर्वपातकात् संकीर्तमानो भगवानन्ता सुतानुभावो विष्णुहिंसां प्रविशिष्टं विदुनोत्यशेषं यथा तमर्को प्रमिता मृषा गिरस्ता हृष्टिरसत्कथा न कथ्यते यन् भगवान् दोक्षजा तदेव सत्यं तदेव मङ्गलं तदेव वर्णं भगवद्गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव स्वस्वन्मनसो महोत्सवं तदेव सोकारणं शोषणं नृणां तत्तस्मलो यशो गुणिन्नु गीयते न तद्पचश्चित्रपदं हरिरसो जगत्पवित्रं प्रगणेत करचित् वाञ्छतीर्थं न तु हंससेवितां यत्राच्युतस्तत्र हि साधवो मला सभाग्विसर्गो जन्ताग्लसंप्लवो यस्मिन् श्लोकमबुद्ध्यमत्तपि नामान्यनन्तशिशो कृतानि चरणमन्ति गायन्ति ग्रन्थि मा साधवा नैष्कर्मं प्रत्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानवलं मृगञ्जन कुतः पुनः शश्वतपुत्रमीश्वरे नैर्पितं कर्म इदप्यनुत्तमं यशस्त्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचारतपस्वतादिषु अविस्मृति श्रीधरपाद्मपद्मयो गुणानुवादश्रवणाधिर्हरेः अविस्मृति कृष्णपदारविन्दयो शृणोति भद्राणि समं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं योजं ग्रयाग्रावत भूरिभागासस्व यच्छत्वदात्मान्यखिलात्मभूतम् नारायणं देवमेश्वं भजस्त्रभावचता विवेश्वा अहं च संस्मारिताद्भुतं श्रुतं पुरा मे परमाशिवक्त्रात् प्रायोपवेशेन पते परीक्षिता सदस्रेणा महतां च निर्णवताम् एतद्वागतन्द्रं विप्रा कथनीयोरुकर्मणः माहात्म्यं वासुदेवश्च सर्वाशुभविनाशनम् एवं श्रावेन यामलक्षमणमन्नधेः श्रद्धावानो शृणुया पुनत्यायात्मनमेव सा द्वादश्यामेकदास्यां मातृन्नानुस्मान् भवेत् पठत्नस्न् प्रयत्तो भवत्यपातिकी पुष्करे मथुरायां च द्वारत्यां यदात्मवान् पुष्मितामेतं पठत्वा मुच्यते भयात् देवता मुनिया सिद्धा पितरो मनवो नृपा यच्छन्ति कामान् गणता शृण्वतो यस्य कीर्तना ऋचो यजंसि नामानि दुजोधीत्यानुविन्दते मधुकुल्या घृतकुल्याभ्यः कुल्या तत्फलं पुराणसंहितामेतामधीत्या प्रयतो दुजा प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजे विप्रोधीत्याप्नुयात् प्रज्ञां राजन्नो दधिमेकलात् वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्रः शुद्ध्येत पातका कलिमलसंहतिकालनोऽखिलेशो हृदि
सदीयते सभीक्षणम् इह तु पुनर्भगवान् शेषमूर्ति परिपठितो नुपदं कथा प्रसंगे तमहमजमनन्तमात्मतत्त्वं जगुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिं द्विपतिरिव चक्रशङ्कराति द्विवरसितमस्तवमच्युतं नतोऽस्मि उपचितवनवशक्तिभिः स्व आत्मान् परिचितस्थितिर्जङ्गमालयाय भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने सुरसुरसुरसुभयाय नमः सनातनाय स्वसुखनिवृत्तचेतसा तत्त्वतस्तान् भावो विचित्रचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं व्यतनुतकृपयास्तत्त्वद्वीपं पुराणं तमिक्लवृजिनं व्याससूनं नतोऽस्मि कृष्णाय नमः श्रीपरमात्मने नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीसूत उवाच यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति देवैस्तवे वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितनङ्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिः ग्रावाग्रकण्डोयना निद्रालोकमठाकृतिर्भगवता श्वासानिला पान्तु वा यत्संस्कारकलानुवर्तनवसा वेलानिभेनाम्भसा यातायातमतन्द्रितं जलधिरे नाद्यापि विश्राम्यते यातायातमतन्द्रितं जलधिरे नाद्यापि विश्राम्यते। पुराणसंज्ञा सम्भूतिमस्य प्राच्य प्रयोजने दानं दानस्य माहात्म्यं पाठादि च निबोधता। ब्राह्मं दशसहस्राणि पाद्मं पञ्चोनषष्टि च श्रीवैष्णवं त्रयोविंशतिचतुर्विंशतिशैवकं दशाष्टो श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशतिः मार्कण्डं नवान्नं च दशपञ्चचतुश्शतं चतुर्दशं भविष्यं च तथा पञ्चशतानि च दशाष्टो ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गमेकादशैव तु चतुर्विंशतिवाराहमेकाशीतिसहस्रकं स्कान्दं शतं तथा चैकं वामनं दशकीर्तितं पौर्वं सप्तदशाख्यानं आत्म्यं तच्चतुर्दशा एकोनविंशतिसोपर्णं ब्रह्माण्डं द्वादशैव तु एवं पुराणसन्दोहश्चतुर्लक्ष उदाहृतः तत्राष्टादशसहस्रं श्रीमद्भागवतमिष्यते इति भागवतातुरं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे स्थिताया भवभीताया कारुण्या सम्प्रकाशितम् आदिमध्यावसानेषु वेनाज्ञाख्यानसंयुतं हरिलीला कथा भ्रातामृतानन्दिततत्त्वतुरं सर्ववेदान्तसारं यद्ब्रह्मात्मे तत्त्वलक्षणं वस्तद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्याख्यप्रयोजनं प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमशं समन्वितं ददाति यो भगवतं भागवतं स याति परमां गतिं राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि स्तां गणे यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते तदृशामृततप्तश्च नान्यत्रासादृति क्वचि निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भुपुराणानामिदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा
तथा पुराण व्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजा श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानाप्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरा कस्मै न विभाषितोऽयमतुलो ज्ञानः प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवान् द्राताय कारुण्यत तच्चोद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि तच्चोद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदष्टं यो विष्णुरातममुचत भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेशा नाथस्त्वं नो यथा प्रभो भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेशा नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् श्री परमात्मने नमः श्री भगवते नमः प्राण पुरुषोत्तमाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् सुदीयं वस्तु गोविन्दा तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रत्नं मे यच्छ शाश्वतीं तुदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रत्नं मे यच्छ शाश्वतीं श्री कृष्णाय नमः श्री परमात्मने नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से श्रीमद्भागवत सप्ताह मूल पाठ का समापन होता है और इसके पश्चात सभी लोग आगे के कार्य में अग्रसर होंगे। आगे का कार्य है भगवान भोलेनाथ का पूजन अभिषेक होगा। तत्पश्चात अभिषेक के बाद हवन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो सभी लोग जो भी घर के सदस्य हैं सभी लोग समय से पधार करके पूजा पंडाल में
पूजन में सम्मिलित हों और सभी नगरवासी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जा रहा है कि आज श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 7वां दिवस है। कथा का समय 3 बजे से 5 बजे के बीच रखा गया है। तो सभी लोग नगरवासी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, सभी लोग अपने कार्यों से निवृत्त होकर के 3 बजे से पंडित जयराम उपाध्याय जी के गृह निवास में पधार करके सुंदर कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि महाराज जी ने बताया था और प्रातः काल की सभा में बताया गया था कि गृह कार्य नाना जंजाला, तो अनेक प्रकार के कार्य रहते हैं। उन कार्यों को छोड़ करके और एक दिन का समय निकाल करके भागवत के महात्म्य और 12 स्कंद के अंतिम में वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति 7 दिन कथा नहीं श्रवण कर पाता है तो अंतिम दिन की कथा श्रवण कर लेता है तो उसको संपूर्ण 7 दिन की कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। तो सभी से निवेदन है कि कोई भी इस फल से वंचित ना रहे, प्रभु का प्रसाद पाने से वंचित ना रहे। सभी लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे और अंतिम दिन की कथा श्रवण करके अपने 7 दिन को धन्य बनाएंगे। इसी के साथ आज मूल पाठ का समापन होता है। ध्यान देंगे 3 बजे से 5 बजे के बीच कथा का समय रखा गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
परीक्षित जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। जगदम्बा परम्बा महारानी की जय। गणपति गजानन भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा माता की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। सोमेश्वर महादेव की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।